एक एक्ट्रेस है कैरा, हाँ एग्जैक्टली, जो मॉडल भी थी और वो शी एक्टिंग स्टार्ट कर दी. शी वाज फेसिंग डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंस अ टीनेज. तो उसने बीच में बताया कि शी स्टार्टेड टू डू सम योगा, टेकिंग योगा क्लासेस. पहली दूसरी क्लास के अंदर उसके इंस्ट्रक्टर ने कोई से योगा की एक्टिविटी कराई एंड शी स्टार्टेड टू क्राई. एंड हाँ एग्जैक्टली, उसमें भी एक सीन था. तो व्हाट हैपेंस के इमोशंस आर एक्चुअली स्टोर्ड इन योर बॉडी, they are not stored here, they're stored in your body. Yoga somehow connects you with that physical memory which is there in your body and it actually comes out. तो उसके जो योगा का स्ट्रक्चर था कैरा का, तो वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने रोना शुरू नहीं किया होता ना इस टाइम पे, तो आई वुड हैव अज्यूम कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू. सही है. तो इफ द इमोशंस आर एक्चुअली कमिंग आउट, तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग हेल्दी. तो अब सिंस द कंटेंट इज सो, लास्ट टाइम याद है मैंने बताया था कि द कंटेंट इज सो पेनफुल कि व्हेनेवर यू स्टम्बल अपॉन इट, तो इट एक्चुअली लीड्स यू टू द ब्रेक डाउन. सही है. बट मसला ये शैडो के साथ कि इट वांट्स इटसेल्फ टू release itself into your consciousness. It is eventually going to do that. या तो you do it on your own terms, या it is going to do it on its own terms. It takes a lot of time. It takes, मतलब according to Jung, बाज़ लोगों के लिए तो it is a lifelong process literally. उनकी जो है वो मतलब the day they realize कि okay fine, there is a lot of content in the shadow which needs to be processed, it can literally take, but ये ज़रूर होता है कि after of like 3, 4, 5 years a point comes कि where you allow things to come from the shadow into your consciousness and you are able to manage the whole thing, the whole experience. It is not really knocking you down. There are some, I think, good ways to regulate your nervous system at least. अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, मतलब मीन्स जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के दरम्यान जो बैलेंस है अगर वो मेंटेन्ड है, तो फिर टू एन एक्सटेंट यू आर एबल टू कंट्रोल दोज फ्लड्स विच एक्चुअली आर रिलीज व्हेनेवर समथिंग ट्रिगर्स यू. फॉर एग्जांपल, विम हॉफ का नाम सुना है आपने? विम हॉफ की ब्रीदिंग टेक्निक है एक. If you're doing that constantly, so it is possible for you to maintain in that regulated state. ठीक है. फिर पीटर लिवीन का जो सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग का मेथड है, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली द एज पर माई एक्सपीरियंस द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ गेटिंग, बिकॉज द स्टफ इज देयर इन द बॉडी, राइट? एंड if you want to get it out, then subsequently you have to do these somatic experiencing exercises. Basil Kolk is a name, very one of the pioneering names in trauma therapy. Peter Levine, इसके अलावा और भी कुछ हैं. All of them wants you to start from your making a healthy connection with your body. ठीक है. पीटर लिवीन ने बेसल कॉल की जो किताब है, when the body नहीं सॉरी The Body Keeps the Score, किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर. ठीक है. और उसमें जो थेरेपी के जो चैप्टर्स है, उसमें पहला चैप्टर मसाज का, सेकंड चैप्टर इज ऑन योगा. सही है. एंड ही सेज के वाइल मतलब जो भी बहुत ही शदीद किस्म के जो ट्रॉमा के जो पेशेंट्स होते हैं ना, पहले हम दोनों को ये वाली एक्टिविटीज़ कराते हैं सो दैट दे डेवलप अ रिलेशनशिप विद देयर बॉडी. बिकॉज जब वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो फिर यू स्टार्टेड टू ग्रेजुअली फील द स्टफ विच इज स्टोर्ड देयर. और जब तक आप फील करना नहीं शुरू करते ना, तब तक वो चीज़ें निकलती नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली the most difficult aspect of processing all of this trauma is to feel that pain completely with full conscious awareness. तो शुरू में ऐसा लगता है कि when you start with therapy you're like fine, all right, and एकदम से your mental health takes a deep dive and over the period of time then you're able to recover. मसला ये है कि अगर आप ये खुद से नहीं करेंगे ना, तो फिर the shadow is going to come out on its own terms. वो फिर ऐसे नहीं निकलता. प्लीज रीड दिस बुक बाय गबोर माटे. ठीक है. हर चैप्टर जो है ना वो इज ऑन डिफरेंट डिजीज, एंड ऑलराइट, एंड ऑल ऑफ दीज डिजीज आर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर लाइफ थ्रेटनिंग. ऑटोइम्यून, कैंसर, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नेम इट. सही है. दिस इज द प्रॉब्लम. इफ यू कीप ऑन सप्रेसिंग, द बॉडी इज गोइंग टू से कि भाई बहुत हो गया, and is going to literally create some kind of a physical illness.